हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, हेलो माय डियर वंस। फ्रेंड, दिस इज अर्चना। अभी हमारा नेशनल इनकम का ही चल रहा था, ठीक है ना। उसी के आगे हम जो है चलते हैं। NDP-FC इक्वल टू कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉयज मिक्स्ड प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड ऑपरेटिंग सरप्लस 13,300 प्लस 16,100 प्लस 5,000 इक्वल टू 34,400। NDP-FC 34,400, NDP-FC 300, NFIA 34,700। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ हमारा चल रहा था, ठीक है ना। देख लीजिए, इसके बाद आंसर यही मिलेगा आपको। विच ऑफ फॉलो, हमने 3 तक पढ़ लिए थे, राइट। कौन सा इंक्लूड होता कौन सा नहीं, 4th से आएंगे। आंसर भी यही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, फर्स्ट का एक बार देख लो। फर्स्ट का देखो, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम का कंपोनेंट कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो डी यानी ये नेट। हाँ, डोमेस्टिक का नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि नेट आ गया ना, नेट तो ठीक है। कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉयड है, ऑपरेशन सरप्लस है और मिक्स्ड इनकम है, राइट। सेकेंड हमारा देख लीजिए, यहाँ आंसर साथ साथ देखते हैं। विच इज नॉट इंक्लूड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। नॉट पूछ रहा है, याद रखना। सेकंड का भी डी होगा, यानी ऑल ऑफ दिस। सारे ही जो है क्या नहीं है, कंपनसेशन नहीं है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, विच इज इंक्लूडेड इन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये देख लो। तो इसमें आपका ए यानी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है, राइट। फोर्थ का देखिए, फोर्थ का डी है, यानी विच ऑफ फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। तो कौन सा है आपका, डिविडेंड है, राइट। फोर्थ का डी, डिविडेंड, राइट। फिफ्थ, which of following is a part of income from ownership of property ये कौन सा है, बोल रहा है which of following is part of income from ownership of property। हाँ, ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में संपत्ति मानी जमीन, ठीक। तो उससे क्या मिलता है, प्रॉपर्टी से हमें रेंट मिलता है, और प्रॉपर्टी से हमें क्या मिलता है, रेंट मिलता है। क्लियर। प्रॉपर्टी से रेंट मिलता है, एंटरप्रेन्योरशिप से आपका डिविडेंड मिलता है। इतना क्लियर हो गया। आगे चलो, नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिए। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, it refers to expenditure final goods and services by individual household and not profitable private institutions serving society. For example, helpage, consumer not durable goods which are used only one, like butter and milk। नॉन ड्यूरेबल क्या होगा, बटर एंड मिल्क ही होगा, जल्दी खराब जाता है जो। फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स विच आर repeatedly used for many years, like furniture and washing machine, ठीक। which are repeatedly used for many years, ठीक है ना, like furniture and, ये हमारे क्या हो गए, ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल जो तुरंत खराब हो जाए, ड्यूरेबल जो लंबे समय तक चले, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। क्लियर। फिर गवर्नमेंट final consumption expenditure, it refers to expenditure on final goods and services by government, for example
expenditure on purchase of goods for consumption by the difference personal. Investment expenditure, it refers to expenditure on purchase of final goods by the producers. These goods are to be further used as they are under process of production. For example, expenditure by the farmer on the purchase of tractors. Fixed investment refers to the expenditure by producers on the purchase of fixed asset. ठीक, कोई फिक्स्ड संपत्ति खरीदा जाए उसको बोलेंगे फिक्स इन्वेस्टमेंट. प्लांट एंड मशीनरी. ठीक. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इट मेजर्स एज डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक ईयर एंड ओपनिंग स्टॉक ईयर. ठीक. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ द ईयर्स के बीच में जो डिफरेंसेस होता है, ठीक है ना, उसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट से मेजर करते हैं. करेक्ट. Net factor income from abroad. It is difference between factor income earned by our residents from abroad and factor income earned by non-residents in our country. ठीक. Net factor income from abroad. तो क्या हो गया, हमारे रेजिडेंट्स हमारे देश के निवासी जो विदेश से इनकम पा रहे हैं. ठीक, समझ पा रहे हो. अर्न बाई आर रेजिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, उनका इनकम प्लस फैक्टर इनकम अर्न बाई नॉन रेजिडेंट्स इन आर कंट्री. कुछ विदेशी लोग हमारे यहाँ भी तो रह रहे हैं, उनका इनकम. तो इन जो हमारे यहाँ रह रहे हैं इनके इनकम को जो विदेशों में हमारे एम्प्लॉयज़ हमारे देश के लोग पा रहे हैं उनसे इनको घटा देंगे तो हमारा जो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिल जाएगा, NFIA. Gross domestic capital formation is sum total of gross domestic fixed capital formation, business fixed investment and investment on residential construction by household. Gross domestic capital formation is the sum total of gross domestic fixed capital formation, business fixed investment and investment on residential construction by household. ठीक, समझ में आया कुछ कि नहीं आया. Gross domestic capital formation is the sum total of gross domestic fixed capital formation. Gross domestic fixed capital formation का sum total होता है ये. ठीक, योग होता है. Business fixed investment and investment of residential construction by household, इन सब का sum total होता है. क्लियर. इन्वेस्टमेंट हो गए हमारे कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, बिजनेस इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड, और हमारा फिक्स डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल. ठीक है ना. ये सारी चीज़ों को जब सम टोटल करेंगे तो हमारा आ जाए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. चेंज इन स्टॉक, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक. समझ आ गया. ये एक बार आपने और भी पढ़ा था, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में पढ़ा था. इट इज़ मेजर डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ द ईयर. ठीक. चेंज इन स्टॉक, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक. कनेक्ट करके पढ़ोगी तो थोड़ा याद रहेगा, नहीं तो एक बार में तो सर के ऊपर से गुजर जाएगा. ठीक है. नेट एक्सपोर्ट is the difference between export and import. Frequently asked question. ये नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं. चलो आ जाओ. Government final consumption expenditure. It refers to expenditure on final goods and services by government. For example, expenditure on the purchase of goods for consumption by defense personnel. Investment expenditure, it refers to expenditure on the purchase of final goods by the
producers. These goods are to be further used as they are under process of production. For example, expenditure by farmers on the purchase of factors, fixed investment. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर. ठीक, प्रोड्यूसर जो है, जो एक्सपेंडिचर करता है, ठीक है ना, ऑन द परचेज ऑफ फिक्स एसेट प्लांट एंड मशीनरी जैसे होता है. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, वही इन्वेस्ट जैसे वहाँ था, यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात हो गई. ठीक, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इट इज़ मेजर एज डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ द ईयर. ओ हो, सेम चीज़ें हैं आई थिंक ना. हाँ चलो कोई बात नहीं, रिवाइज कर लो. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड अर्न बाय आर रेजिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड. ठीक, एंड फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट्स इन आर कंट्री. Gross domestic capital formation, sum total of gross domestic fixed capital formation, business fixed investment and investment on residence construction by household. Change in stock, difference between closing stock and opening stock. Net export is the difference between export and import. Frequently asked questions. ठीक, क्वेश्चंस देख लो किस टाइप के पूछे जाते हैं. ठीक, आए हैं जिस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा. व्हाट डज एक्सपेंडिचर मेथड मेजर? What are the main component of expenditure method? What do you understand by consumption expenditure? What do you understand by government final consumption expenditure? What do you understand by investment expenditure? Classify investment expenditure. What are main part of fixed investment? What do you understand by inventory investment? How shall you calculate net export? What are main precaution take while using expenditure method? Hot questions. In net factor income from abroad is zero in case export is equal to import. Do you agree that investment on the purchase of shares is a part of net capital formation? What cause increase inventory stock? Why should experts be included in GDP? How is net export different from net factor income from abroad? How can estimate of GDP using income method and expenditure method be identical when households do not spend their entire income on purchase of goods and services, and part of them remain unsold during an accounting year? Higher order thinking questions. From the following data, calculate national income by income method. Component of employees 1200, net factor income from abroad -20, net indirect tax 120, profit 800, private final consumption expenditure 2000, net domestic capital formation 770, consumption of fixed capital 130, rent 400, interest 620, mix income of self-employed 700, net expert -30, government final consumption expenditure 1100. चलिए second. From the following data, calculate the gross national product
at market price by income method, expenditure method. Mixed income self-employed 400, consumption of employed 500 employees, net domestic capital formation 280, private final consumption expenditure 900, net factor income from abroad minus 20, net indirect taxes 100, consumption of fixed capital 12, net export minus 30, profit 350, rent 100, interest 150, government final consumption expenditure 450. Income method NDPFC, compensation of employees mixed income plus mixed income of self-employed operating surplus 1200 plus 700 plus 400 plus 620 plus 800 equal to 1200 plus 700 plus 1820 equal to 3720, 3720. NNPFC equal to NDPFC plus NFIA. 3720 plus minus 20, 3700. Expenditure method GDP MP PFCE plus GFCE plus gross domestic capital formation net export 200 plus 700 770 plus 130 plus minus 30 3970. NDPFC equal to GDP MP minus NIT minus depreciation 3970 minus 130 minus 120 equal to 3720. NNPFC equal to NDPFC plus NFIA 3720 plus minus 20 equal to 3700. Answer. Income method NDPFC, consumption of employees mix income of self-employed operating surplus. NDPFC 500 plus 400 350 plus 100 plus 150 1500. NDPFC equal to 1500 plus minus 20 1480. Expenditure method NDPMP PFEC CFCE PFCE GFCE plus net domestic capital formation net export NDPMP 900 plus 450 plus 280 plus minus 30 1600. NNPFC equal to NDPMP plus NFIA minus NIT. NIT माने net indirect tax 1600 plus minus 20 minus 100 equal to 1480. Private income, personal income and personal disposable income. NDPFC GDP MP minus NIT depreciation 3970 130 minus 120 3720.
NDPFC इक्वल टू NDPFC माइनस NFIA प्लस NFIA, ठीक। NDPFC में जब NFIA प्लस कर दोगे तो NNPFC बन जाएगा। 3720 प्लस माइनस 20 3700 इनकम मेथड NDPFC compensation of employees mixed income self-employed operating surplus, ये हो चुका है, फिर भी कर लो। NDPFC 500 प्लस 400 3500 प्लस 100 प्लस 150 1500 NNPFC 1500 प्लस माइनस 20 1480 एक्सपेंडिचर मेथड NDPMP PFEC प्लस GFEC प्लस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नेट एक्सपोर्ट। जब तक आपको फार्मूला नहीं याद होगा आप नहीं पुट कर पाओगे। फार्मूले रट लो, तब प्रैक्टिस करो। सबसे पहले फार्मूला माइंड में होना चाहिए, बिना देखे आपको फार्मूला याद हो, ठीक। NDPMP इक्वल टू 900 450 280 प्लस माइनस 30 1600 NNPFC इक्वल टू NDPMP प्लस NFIA माइनस NIT 1600 प्लस माइनस 20 माइनस 100 इक्वल टू 1480। प्राइवेट इनकम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैलकुलेट प्राइवेट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम फॉर्म डेटा, ठीक। तो आपके NDPFC 5000 सेविंग नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज 200 इनकम फ्रॉम NDPFC अक्यूरिंग गवर्नमेंट सेक्टर 1000 current transfer from the government 150 saving of the corporate sector 400 current transfer from rest of the world 50 NFIA minus 40 corporate tax 60 direct personal tax 140 income from NDPFC acquiring the private sector NDPFC minus income from GDPFC acquiring to the government sector। 5000 minus 1000 इक्वल टू 4000। प्राइवेट इनकम इक्वल टू, फार्मूला रट लो बच्चा। प्राइवेट इनकम क्या होता है? इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NDPFC अक्यूरिंग प्राइवेट सेक्टर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट 4000 प्लस माइनस 40 प्लस 150 प्लस 50 तो 4160, करेक्ट। चलो पर्सनल इनकम प्राइवेट इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस कॉर्पोरेट टैक्स। पर्सनल इनकम क्या होता है? प्राइवेट इनकम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस कॉर्पोरेट टैक्स। प्राइवेट इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस कॉर्पोरेट टैक्स 4160 माइनस 400 माइनस 60 यानी 3700। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये PDI क्या होता है? पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स गिफ्ट टैक्स माइनस फीस एंड फाइन्स। 3700 माइनस 140 3600 नेट disposable income and gross disposable income. GNDI is the income of all resources available to the residents
of a country residents of a country for spending, consumptions and saving. Net national disposable income and gross national disposable income. GNDI is the income from all resources available to residents of a country for spending on consumption and saving. GNDI equal to GNP MP net current transfer from raw. Calculate national disposable income from following data. GDP MP 2000 net current transfer to rest the world 200, NIT 150, net factor income from abroad 60, national debt interest 70, consumption of fixed capital 200, current transfer from the government 150, NNDI equal to NNP MP plus net current transfer from the raw. Here it is net factor income to abroad 60, so it will become minus 60. NNP MP equal to GDP MP minus depreciation plus NFIA. 2000 minus 200 plus minus 60, 1740. NNDI equal to NNP MP plus net current transfer from the rest of the world 200, but in the question it is net current transfer to the rest of the world minus 200, therefore it should be plus 200 minus 1740 plus 200 1940. Calculate national income and gross national disposable income from following data. Private income, private final consumption expenditure 900, profit 100, government final consumption expenditure 400, NIT 100, gross domestic capital formation 250, change in stock 50, NFIA minus 40. Net current transfer from the rest of the world 30, net imports 30, consumption of fixed capital 20. Answers. Answer. Expenditure method. GDP MP, GDP MP, PFCE, GFCE, gross domestic capital formation plus net export 900, 400, 250 net export. In the problem net export is given as 30, so net export will be minus 30, 900, 400, 250 minus 35, 20. NNP FC, GDP MP minus depreciation NIT plus NFIA, national income equal to NNP FC को ही आपका नेशनल इनकम बोलते हैं, मालूम है ना. 15, 20 minus 20 minus 100 plus minus 40, 13, 60, gross national
disposable income, GNDI equal to GDP MP plus NFIA, net current transfer from the rest of the world. 15, 20 plus minus 40 plus 30, 15, 10, which is better, real GDP nominal GDP? ये रट लेना रट डालना बिल्कुल. Real GDP is better compared to nominal GDP. Nominal GDP is GDP current year. Nominal क्या होता है? Current year. Nominal GDP current year. Real GDP better compared to the nominal GDP. Nominal GDP current year. Real GDP calculation of GDP at constant price base year. Real GDP helps in determining the effect of the increased production of goods and services. Nominal GDP can increase due to price rise without any change in real output. Real GDP is better to make periodic compare fiscal output of goods and services. Real GDP facilitate international comparison. GDP and welfare, ये समझ में आ गया. नॉमिनल क्या होता है? करंट. नौ से नॉमिनल, नौ से करंट, करंट में भी एन है. थोड़ा दिमाग में ऐसे ही करके याद करो, नहीं याद नहीं होगा. रियल जीडीपी क्या है? नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर पर होता है. रियल जीडीपी बेस ईयर पे होता है. बस रियल बेस नॉमिनल करंट रट डालना. फिर जीडीपी एंड वेलफेयर. जीडीपी इज़ वन ऑफ इंडिकेटर्स of economic well-being. Higher is the GDP, higher is the GDP will be higher will be the welfare. This may not be true always, but due to following reason: distribution of GDP, higher GDP in the economy and it is not equally distributed means concentration of wealth in hand of a few individuals. Right here. So dear all, it was all about this video. Next video पे अभी तुरंत हम फिर इसी की बात आते हैं. ठीक है ना? Love you all guys.